हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही। वालेकुम सलाम सर। वो स्लाइड पीपीटी स्टार्ट करो ना। हाँ लेक्चर मैम सबका वीडियो बंद कौन कर। है? लाइव हो रहा है, लाइव स्टार्ट हो रहा है। पीपीटी भी शेयर हो रहा है। एक सेकेंड बस, लाइव स्टार्ट हो गया। हाँ, पीपीटी विल बी शेयर नाउ। वीडियो बंद करने बोलो। हाँ वीडियो बंद करें सब। वीडियो बंद करें। इस तरह हम स्टार्ट करें। असद सर, वो दुबई के ग्रुप में लिंक भेजो। अतिया मैम को लिंक भेजो। दुबई। हाँ सर। अतिया को लिंक किया है सर। अतिया ने जो रजिस्ट्रेशन थे उनको सबको भी भेज दिया है। हाँ, आइडियाज ग्रुप में भेजो। हाँ, अपने जितने ग्रुप थे उनमें सब में भेजो। हाँ, वो सब भी, उनको भी सबको पहुंच गया है। हाँ, अपने ग्रुप में भेजो। नोबडी शुड बी मिस्ड आउट। 2-3 और लोगों का काम पे लगाओ। आप स्टार्ट करो सर अपना। लेट्स स्टार्ट। Assalamu alaikum everyone. So we will be conducting this lecture today. It's a career guidance and foundation session which will be taken by Anis Kutty sir himself. Anis Kutty sir has been an educator since the past 35 years. He is the founder and director of Anis Defense Career Institute, Evergreen Education Foundation, Anispedia, and he has mentored and produced 650 officers so far who are serving the defense forces of our country. Hina, can you change the slide? Anis Defense Career Institute was established in the year 1988. We have over 650 students who are serving in the Army, Navy, and Air Force, different parts of the country. Our institute has also produced over 1,000 engineers and more than 100 doctors. Our institute doesn't just believe in education with schooling. It believes in education beyond schooling. It has also produced 100 plus entrepreneurs. We are also proud to say that we have given 3 IPS officers and 3 IAS officers. There are many students whom we have given scholarship and we have helped the underprivileged. हाँ, chat to host और ही ना वीडियो ऑफ करना पड़ेगा सबका। सबका वीडियो ऑफ करो और chat to host करो। Chat to host ऑन है सर। You can ask any questions regarding the PPT, regarding career guidance. Anything under the sun you can ask. We'll reply, inshallah. Those who are attending the lectures. Mute all karo, mute all. Next slide. We have been rated as the top coaching institute by the Times of India for National Defense Academy. It's a very big prestigious thing for us, and we are proud to say that we believe in education beyond schooling because we train students for studies which are apart from their school curriculum. We train them for competitive exams in a way which will help them give any kind of competitive exam under the sun. Next slide, please. This is a brief introduction. Anis Kutty sir's introduction.
He is a polymath. Can anyone tell me what a polymath means? Can you type it out in the chat box? What a polymath means? Okay, I won't be able to see the answers, but A person with more knowledge. yes, yes. A person who has a wide knowledge and wide learning. So he has knowledge of a lot of things and he is a very learned person. He is also a pragmatic think tank. He always keeps giving us ideas which no one else can. He brings up ideas on the spur of the moment. He's a mentor for a lot of students. A mentor. Hello. Yes, ma'am. Please continue. You can. Yes, a mentor. A mentor is someone who doesn't just teaches students, who doesn't just help students, who doesn't just believe in their work, but he also shows them the path towards what they are supposed to do, towards what they can achieve. As we all know, he is a mathematician. He has invented sattas. He has invented shortcuts. So there are these tips and tricks that he uses to teach maths to students, and he calls them sattas. He has named it as sattas. So it is very innovative because he has named it also in a very interesting way. One of the sattas is called Amar Akbar Anthony. One of them is Chandal Chokri. One of them is Changu Mangu, Mara Mari, Jugad. So these are the kind of names that he has given to these sattas. Students find it interesting, and if when they are giving their competitive exams, if they see a sum which is connected to a particular topic, and Anisa has invented a satta for that and he has showed them that satta, then they know exactly what has to be done. So instead of solving a 2-page long sum, they can just derive the problem in minutes, in less than even a minute sometimes. He is a defense career counselor. Defense competitive exam is a very large array, and it gives you a lot of scope, not just for NDA. So if a student is preparing for his NDA, he can give a lot of other exams also side by side, which can help him to enter the Army, Navy, and Air Force through other ways also apart from NDA. And Anisa is the best guide, not just for defense competitive exams, but for a lot of other exams also. He's a teacher trainer. So in 2022, we were awarded by 3 awards. One was in Lucknow, one was in Hyderabad, and one was in Delhi. Anis Defense Career Institute and Evergreen Education Foundation were awarded as the best teachers trainer institute. And we have trained more than thousands of teachers, not just in India, outside India also. Just last month, we had a batch of teachers who had come all the way from Kanpur to us, and we gave them a prolonged teachers training over the period of 10 days. And it was a very good learning experience for us also, a very good learning experience for them also. Can anyone tell me what an aphorist means? So Anis Kutty sir is an aphorist also. An aphorist is someone who uses small phrases for saying big things. So he is one of them. And I can go on talking about him and his work, the work that he has done for a very long time. But let us move further and take the next slide. Recently, we have opened our new branch in Dubai in the name of Anispedia. Athiya Anis Kutty is the CEO of that branch, and Anispedia also believes in engaging, connecting, and empowering students. So
it's not just important to educate student, we have to engage with the student on a one-to-one level. We have to make a proper connection with the student, because when a student learns something, he has to be able to reciprocate also when he understands something. And if we establish the connection of engaging and connecting with the students, then it definitely empowers one. So we believe in engaging, connecting, and empowering with the student, with the teachers. And Anispedia is a very good example. And it has been running very smoothly, and it has developed a lot of online programs also, which many students from across the globe are benefiting from. Next slide. So as I mentioned earlier, in Delhi, we had received the Best Teachers Training Institute Award of the Year at the Indian Education and EdTech Summit. In Hyderabad, the Best Teachers Training Institute Award in the 24th International Education Summit was given to Evergreen Education Foundation. And then the Leading Teachers Training Institute at the 13th Education Summit Award 2022, which was held at Lucknow, we had received the award for the same. So we really pride ourselves because we believe that if we have good teachers, they will produce good students. When a learned teacher, when one good teacher stands in front of the class, the whole of the class, the knowledge that he imparts in the class is something that is beyond imagination. Because when a teacher is training those students, they don't just teach, they teach it with passion. And that passion shows in what the children produce in their exams, what the children give in their exams, and it obviously shows in their results after that. Next slide. So we don't restrict our students to a particular a way of teaching. We have multiple batches in which they can come and learn with us according to their convenience. We have students in regular batches as in which run throughout the year. We have vacation batches. So those students who are not in Pune, or those students who have other commitments during the school days, they can join our classes during the vacations. So we have Diwali vacation, winter break, summer break. And if you have a prolonged vacation during the school hours, then students can join those batches with us. Our vacation batches are very regular batches, and we try to complete as much the syllabus as we can during those vacation batches. We have weekend batches for those students who stay in the city but are busy during the weekdays, and they can come only on weekends. So we have weekend batches for those kind of students. And then we have our crash courses. Our crash courses are usually 40 days or 2 months crash courses that we run. Currently, we are coming up with our NDA crash course, which will take place for 40 to 45 days before the NDA exam takes place. Similarly, we have our crash course for MHT-CET, for CUET, for JEE, even for NEET exam. Apart from these competitive exams, before the students appear for their board exams, when they are in 10th standard and 12th standard, we run crash courses for 40 days or 1 month as per the students' convenience before their exams, in which we cover the whole syllabus with revision, with tests for before their board exams start. Next slide, please. So if you ask us then that when do we give holidays to our students? Well, we don't give holidays to our students. We take classes 365 days हमारा a year. 365 days classes है, उनको बताओ. हाँ, we take classes for 365 days a year. हमारे क्लासेस को कभी छुट्टी नहीं रहती है. हमारे स्टूडेंट्स को हम लोग मैं ईद बाद के में भूल दिन, जाऊंगा, मेरे को दिवाली के दिन अनम्यूट भी. क्या करो. हाँ सर, आप म्यूट ऑल अनम्यूट करने अपने के आप बाद को बोलिए. कर सकते हैं.
आपको होस्ट बनाया ना, आप टैप करेंगे तो अनम्यूट हो जाएंगे। आप Okay, अनम्यूट है अभी। हाँ कंटिन्यू हाँ। सो वी रन क्लासेस 365 डेज अ ईयर। सर आप कंटिन्यू करिए ना स्लाइड्स। ये वो लास्ट वाला लाइन पढ़ो ना, ये स्लाइड में का जो है ना लास्ट लाइन पढ़ो ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। All don't have equal talent, but all of us have equal opportunities to develop our talent. और वो साइड It's में एक all बहुत about इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, it's all वो about वो भी पढ़ो। equity and not about equality, हाँ, और एक लाइन लिखा है देखो। and to remove procrastination. हाँ, so those who are attending, please type procrastination chat box में. Many of them they don't understand the meaning of procrastination. और गूगल करो, गूगल करना पाप नहीं है, गलत चीजें गूगल करना पाप है। प्रोक्रास्टिनेशन गूगल करो। Anyone who can tell me what is procrastination? It should be interactive. बच्चे लोग, ask everybody to join. अपना स्टाफ को भी ज्वाइन करने बोलो, सदफ मैम। जितने ज्वाइन भी किया अपने है स्टाफ सर है, टीचिंग स्टाफ नॉन ने। टीचिंग, हाँ स्टाफ ने हम भी लोग ज्वाइन ज्वाइन किया किए। है। ग्रुप में मैसेज डालो सबने कि किया। let all staff, ओके all staff, non teaching staff, everybody should join. एक मैसेज डालो, लिंक भी भेजो। Yes, anybody who can tell me about procrastination? कोई बताएगा? Procrastination स्टाफ भी बता सकता है। लीना मैम, प्रोक्रास्टिनेशन मतलब क्या? प्रिया मैम, प्रोक्रास्टिनेशन मतलब क्या? अदनान, प्रोक्रास्टिनेशन मतलब क्या? अफरीन, गूगल करके बताओ। Hello, असद सर sir. Can बताएंगे। I say something? या डेफिनेटली यू कैन से। Yes, procrastination refers to like delaying something or postponing the things. हाँ, वो कबीर बोलता है ना, आज करो सो अब करो। Correct. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग पीछे रह जाते हैं ना, क्योंकि किसी भी आदमी को 24 घंटे से ज्यादा नहीं मिलने वाला है। कोई स्पेशल नहीं है, सबको मर के भी जाना है। तो जो 60-70 साल की जिंदगी में जो करना है तब इसी में करना है। तो प्रोक्रास्टिनेशन उसको बोलते हैं कि वॉट एवर वी वांट टू डू, हम क्या बोलते हैं, टाल देते, नहीं यार बाद में करेंगे। 24/7 का जो कंसेप्ट है एजुकेशन का, एकेडमिक्स का, वो रेडियो का जैसा कंसेप्ट है, दुबई सिटी के जैसे कंसेप्ट है, मक्का मदीना के जैसे कंसेप्ट है कि 24/7 चालू है। कोई तवाफ को रुकता नहीं है, सिटीज कोई रुकता नहीं है, कंटिन्यूसली गाड़ी चलनी चाहिए, और कोई किसी के लिए नहीं रुकता। एक एनीबडी हु वांट्स टू लर्न समथिंग एंड इफ ही फील्स दैट आई वांट टू स्टडी नाउ, उसको टीचर अवेलेबल होना चाहिए, उसकी पढ़ाई होना चाहिए। बहुत लोगों को ये कंसेप्ट हजम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एडीसीआई का। इनफैक्ट उसका एक अच्छा रिजल्ट है कि हमारे काफी बच्चे भी सैनिक स्कूल में पास हुए। ऑलमोस्ट 80% बच्चे क्वालिफाई हो गए एग्जाम के लिए। उसकी वजह यह है कि वो 24/7 बजना चाहिए। एनीबडी हु कैन राइट इन द चैट बॉक्स प्रोक्रास्टिनेशन का मीनिंग, कोई स्टाफ को लिखने लगाओ। हु इज देयर एज अ होस्ट? सदफ मैम। असद सर इज आल्सो एज अ को-होस्ट। हाँ, तो असद सर को बोलो। असद सर कहाँ है? भाग गए क्या? है सर, है। हाँ, तो लिखो ना, प्रोक्रास्टिनेशन का मीनिंग लिखो। Sir, please गूगल check करना my पाप reply. नहीं है। हाँ, आपका रिप्लाई नहीं दिखेगा, होस्ट को ही दिखेगा। सर चैट फॉर एवरीवन करने लगा ना। चैट फॉर एवरीवन करना है? आपको भी दिखेगी चैट। हाँ ठीक है, अभी कर लो। कोई आधा पागल तो उसके लिए फिर बंद करना पड़ता। कर लो। ओके, हमारा भी पूरा स्टाफ को बैठने को बोलो। कभी कभी चांस मिलता है बात करने का, तो ये बात करना चाहिए, मालूम भी होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। हमारा विजन मिशन मैच होना चाहिए। विजन लिखो ना सर। अमर अकबर एंथनी, असद सर, नया डायलॉग हाँ है, सर। ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना, फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी। गुड से ग्रेट बनना, फ्रॉम गुड टू ग्रेट। और थोड़ा तीसरा वाला एंथनी, एग्जिस्टेंस से एक्सेलेंस पे आना। ये लीना ने म्यूट करके बैठे, सुन रहे क्या? ऐसा कान में लाके बैठे। अदनान, आफरीन मैम, कुछ तो बोलो, चैट में लिखो हाँ सुन रहा हूँ।
अथर्व सर, पाटोले meaning- सुन रहा क्या? क्या चैट जीपीटी खेल रहा? फरहाना शेख, सर प्रोक्रास्टिनेशन का मीनिंग है सर पोस्टपोनिंग ए टास्क। हाँ आप सुन रहे हो? मतलब हाँ, मंडल सर क्लास में क्या? जहाँ पे क्लास मीटिंग कहाँ चल रहा है? सदफ मैम वहाँ मीटिंग कहाँ चल रहा है? हम तो एसआर में बैठे हो सर। नहीं, सदफ मैम कहाँ बैठे? सदर मैम ऊपर में है सर। अच्छा सर मैं लेक्चर यहाँ क्लास बीएनआई के मैच के लिए आई हुई हूँ। वहां से चल रहे हो आप? हाँ क्रिकेट मैच है आज, अभी थोड़ी देर में मेरी बैटिंग रहेगी। ठीक है, अभी अभी बैटिंग करो, अभी इस क्लास का बैटिंग करो। सर अभी Continue, बैटिंग कंटिन्यू मैम, कंटिन्यू बैटिंग आने तक। सोनाली मैम नहीं आई क्या? हाँ, प्रोक्रास्टिनेशन मिल गया। कंटिन्यू द नेक्स्ट स्लाइड, सदफ मैम। अच्छा सर, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही? नहीं सर, वो मुझे को होस्ट बनाने के लिए। हाँ वहाँ किसी को बोलो ना, एंजेलिना मैम नहीं है क्या? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम। कुट्टी सर, बात कर सकते हैं अभी या फिर हम हाँ आपको पर्सनल बिल्कुल बिल्कुल मैसेज बिल्कुल करना? बात कर रहे हो। नहीं, बात कुछ कर सकते नहीं, हो सर, बिल्कुल बात मैं ये इस हाँ। मौजू से हटके थोड़ी बात करना चाहता हूँ, तो कर सकते हैं? मौजूद से हटके तो नहीं बात कर सकते। ये अगर करियर गाइडेंस का कोई पार्ट है तो बताइए। हाँ, कैरियर गाइडेंस का है। अब मेरे लड़के हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सऊदी अरब में हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ यहाँ पर। हाँ हाँ मेरा नाम मोहम्मद इनामुर रहमान है। हाँ तो मेरे लड़के हैं अभी 4 है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा लड़का हाँ। मेरा अभी 6th में है। मैंने आपको मैसेज किया था पर्सनल पर। अच्छा, तो बोलिए ना सर, बोलिए ना, उस बोलिए ताल्लुक से मुझे बात करना था। मुझे अभी से उसको नीट वगैरह का कोचिंग का थोड़ा सा सोचना है, तो मुझे थोड़ा गाइड करिए। मुझे आइडिया नहीं है अभी बिल्कुल इंडियन एजुकेशन बिल्कुल सिस्टम बिल्कुल। का अभी कुछ भी। हाँ हाँ हाँ। तो सर मुनासिब अभी वो रहेगा मैं बच्चा, आपसे पर्सनल पे नहीं पर्सनल, ही बात करता हूँ। ये प्लेटफॉर्म पे इसीलिए ये प्रोग्राम रखा है सर। और आपने अच्छा जी सर। क्वेश्चन पूछा। और ये जी 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को जो है ना, सबसे पहला एक पियर्सन का बुक आता है। अच्छा सर, टाइप करो जी सर। वो, उसका नाम है पियर्सन का है ना, फाउंडेशन का सीरीज आता है। जी सर। फाउंडेशन वॉज फॉर बाय पियर्सन। पियर्सन का तो जाना माना कंपनी है ना, तो उसका बुक जी आपको जी अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, फाउंडेशन कोर्स। जी सर। असल में जो अभी हम लोग सक्सेस जी स्टोरी की सर। बात कर रहे थे ना, इंडिया में 4 जी एग्जाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, somebody जी is राइटिंग ना, नवोदय लिखो, नवोदय। हाँ सर। नवोदय हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। जी सर। इनामुर रहमान सर, नवोदय हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, जी उसका सर। बुक मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्जाम है। और हर अच्छा स्टेट सर। में एक सैनिक स्कूल होता है। नवोदय का एग्जाम ऑलमोस्ट कौन फ्री है, सा? हर डिस्ट्रिक्ट में उर्दू में भी होता है, अरबी में भी होता है, मलयालम में भी होता है, जी और 20 जी जी लैंग्वेज में होता है। हर डिस्ट्रिक्ट में 100 सीट होता है। 5th स्टैंडर्ड के बच्चे का जी एग्जाम सर। होता है। अगर वो बच्चा उसमें सेलेक्ट हो गया ना, तो उसका पूरा एजुकेशन फ्री हम्म। होता है। इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। अच्छा, एक तो तो ये वो है। क्या दूसरी बात, कैसे अप्रोच? जी वो नवोदय का फॉर्म आप भर सकते हैं, सिर्फ एग्जाम इंडिया में आके देना पड़ेगा। हर नहीं, साल में बच्चे होता मेरे है वो। इंडिया में हैं। बच्चे मेरे इंडिया हाँ में हैं। बिल्कुल, एग्जाम आप इंडिया में दे सकते हैं। आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, बाद में मैं आपको आइडिया भी बताऊंगा। फॉर्म भरने के लिए हम हेल्प करते हैं। एग्जाम जी 5th सर। का होता है। फिर उसके बाद का जो एग्जाम होता है ना, वो होता है उससे उससे थोड़ा टफ होता है। उस एग्जाम का नाम है सैनिक स्कूल। ये एक स्टेट में एक एग्जाम होता है। सैनिक अच्छा, स्कूल का जो एग्जाम होता है ना, एक स्टेट में एक होता है। अभी हमारा 80% बच्चे हमारे सैनिक स्कूल क्वालिफाई किए। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग माशाल्लाह, बहुत खुशी मना मुबारक रहे मुबारक हैं। बहुत मुबारक। अच्छा रिजल्ट है हमारा। बहुत बहुत तो मुबारक। वो आप ये बहुत सैनिक अच्छी स्कूल, मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह पाक हाँ आपको जज़ाए खैर दे इसका। आमीन माशाल्लाह। आमीन। तो इसके बारे में लोगों को पता नहीं। देखो सर, एक जो हमारा जो रेगुलर स्कूल का एग्जाम होता है,
और दूसरा जो हमारा जी। एग्जाम होता है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसमें जमीन आसमान का फर्क हो जी। गया। जी। और हम लोग ये समझते हैं कि हम लोगों ने किसी भी बोर्ड पे अगर एडमिशन ले लिया, मैं कोई बोर्ड का नाम नहीं लेना चाहता, तो लोग ये समझते हैं कि अभी हमारा बच्चा नीट और जेडब्ल्यू पास करेगा। ऐसा नहीं है। जी। प्रॉब्लम क्या होता है, मेरा फेवरेट डायलॉग है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक अगर मेरा पेट भरता है 4 चपाती खाने से, मुझे 2 ही चपाती खिलाया जाता है। और बच्चा जब 11th में आता है ना, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, तो जो रह गया, तो 2 चपाती रह गया ना उसका हर साल का, 10 साल में कितने हो गए? 20 चपाती। वो 11th स्टैंडर्ड में आने के बाद उसको 20 चपाती एक साथ खाना पड़ता है। जी। जी। तो जी। वो सही। बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाता तो उल्टी करता है। जी। सही। बिल्कुल। 18 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, 2 लाख बच्चे डॉक्टर हो जाते हैं, चलो डेंटल, जानवरों का डॉक्टर, एमबीबीएस, बीएमएस सब पकड़ के। तो ये बाकी 16 लाख बच्चों का क्या होता है, ये जी। माँ बाप सोचते नहीं है और एजुकेशन सिस्टम भी नहीं सोच रहा। जी। जी। एडीसीआई अनीस डिफेंस करे इंस्टीट्यूट है, हम लोग सिर्फ डिफेंस की बात नहीं करते, डिफेंस हमारा रोजी रोटी है, हमारा जी। क्लास ये डिफेंस पे चलता है। लेकिन ये ऐसे एग्जाम्स है सैनिक स्कूल का, जहां पे 6th स्टैंडर्ड का बच्चा इंटेलिजेंस पढ़ता है किसी भी माशाल्लाह। करिकुलम में, चाहे आईबी का हो या सीबीएसई का हो या कोई भी करिकुलम है, किसी भी स्कूल के लेवल में बच्चों को इंटेलिजेंस नहीं पढ़ाया जाता, लॉजिक नहीं पढ़ाया जाता, एनालिटिक्स नहीं पढ़ाया जाता, एप्टीट्यूड नहीं पढ़ाया जाता। ये मदरसे में पहले पढ़ाते थे, लेकिन वो जी। मदरसे वालों ने भी छोड़ दिया पढ़ाना। जी। जी। तो ये जो एग्जाम्स है, हिंदुस्तान में अभी भी कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपने सैनिक स्कूल का एग्जाम दे दिया तो आपको सैनिक स्कूल में जाना जी। ही पड़ेगा। इतना आसान भी नहीं है। जी। उसके बाद इंटरव्यू होता है, मेडिकल टेस्ट होता है। लेकिन एक बच्चा जब सैनिक स्कूल का एग्जाम लिखता है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट करती है, कोई चैट बॉक्स में लिख रहा है क्या जो मैं बात कर रहा हूँ? असद सर, किसी को चैट बॉक्स में लिखवाओ ना। हाँ सर। हाँ, किसी को चैट बॉक्स में लिखवाओ, एंजेलिना मैम को बुला लो, कि मेरे पास काफी लोग सोनाली मैम आएंगे भी तो फिर ज्वाइन मैं कर बात रही नहीं है। कर। हाँ, सोनाली मैम भी और ज्वाइन सोनाली करेंगे। मैम को ज्वाइन करने बोलो। हाँ, क्योंकि ये काफी लोग यहाँ इंटरेस्टेड है, तो उनको बात पहुंचनी चाहिए। तो मैं एक सैनिक स्कूल की बात कर रहा था, इनामुर रहमान साहब। सैनिक जी स्कूल सर। जो है एक डिस्ट्रिक्ट में एक है। अभी आप इंडिया में कहाँ रहते हैं? मैं नांदेड़, महाराष्ट्र। अभी नांदेड़ में। नांदेड़ में देखो, जो लातूर पैटर्न था ना, वो नांदेड़ शिफ्ट हो गया। लातूर पैटर्न नांदेड़ क्यों शिफ्ट हो गया? लातूर पैटर्न में सिर्फ रट्टा मारवाते थे, एचएससी बोर्ड एग्जाम में मार्क्स मिल जाता था तो बीजे मेडिकल में भी एडमिशन मिल जाता था। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कंपलसरी किया कि आपको नीट लिखना है। तो नीट लिखना है तो हम अच्छा। रट्टा नहीं मार सकते, सट्टा मारना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लैरिटी मांगता है। तो कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा स्टार्टिंग से पढ़े। 360 डिग्री हुई। सरिता मैम म्यूट करो, सरिता मैम म्यूट करो। हाँ, तो ये जी सर। बहुत इंपॉर्टेंट है जी। समझना। तो सैनिक स्कूल में अगर एक बच्चा क्वालिफाई होता है ना, महाराष्ट्र का जी। सैनिक स्कूल 2 जगह है, सातारा में और चंद्रापुर में। अच्छा। तो यही 2 ही जगह है, तो 100 बच्चे जाते हैं दोनों जगह। हर डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेशन भी है। तो वो बच्चा माहिर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बच्चे ने सैनिक स्कूल 6th में भी होता है, 9th में भी होता है, तो जो बच्चे ने अच्छा। सैनिक स्कूल का एग्जाम पास किया और वो मेरे पास आया, तो बकौल मौलाना यूनुस साहब के, मैं हमेशा उनका डायलॉग यूज करता हूँ कि आम के झाड़ के ऊपर जब फूल आते हैं, हर फूल कैरी नहीं होता। पहले फूल आता है ना जी आम के झाड़ बेशक। पे, जी तो बेशक। वो हर सही। फूल जो है कैरी नहीं होता है, और जी हर सही है। कैरी जो है ना वो पकता नहीं है, और हर पका हुआ सही है। आम जो है ना वो शेतकरी को, फार्मर को नहीं मिलता। सही। बिल्कुल सही। तो सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हम लोग भी पका हुए आम की तलाश में हैं। सही। हमको ऐसे हाँ। बच्चे चाहिए जो पालता खड़ा नहीं है, मराठी में बोलते हैं ना, पालता खड़ा नहीं है, जी। जी। हाँ। तो पढ़ना चाहते हैं। तो अगर एक बच्चा सैनिक स्कूल का एग्जाम क्लियर किया, हमारे पास आया, तो हम हमारे फीस में उसके लिए डिस्काउंट है। अच्छा। हाँ, एक बच्चे ने उससे बड़ा एग्जाम नवोदय पास किया, उसको फीस का डिस्काउंट है। एक बच्चे ने आरएमएस करके, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है इंडिया में, जो 5 है पूरे हिंदुस्तान में। देखो मैं लोकेशन बताता हूँ आपको, अजमेर, छेल, जी। और आपका बैंगलोर, बेलगाम, जी। और एक रह गया, और एक कहाँ रह गया भाई, स्टाफ बताओ जरा, और एक रह गया मेरा, कौन सा रह गया? धौलपुर। धौलपुर। हाँ, स्टाफ जागे के सोए, अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। मैं जानबूझ के ना 4 ही बता रहा हूँ। तो ये स्टाफ को भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, इसलिए कि स्टाफ को भी पता होना चाहिए
कि जी। ये सारे एग्जाम के बारे में। अभी आरएमएस के एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है और बहुत टफ होता है। 70% अच्छा। सिर्फ वो आर्मी में जो काम करते हैं ना, डिफेंस में, उन्हीं को जाता है सीट्स, उनके बच्चों के लिए। 30% अच्छा, सिविलियंस के लिए। तो हम्म। वो एग्जाम आपके बच्चे ने अगर क्लियर किया तो मैं आपको फीस में डिस्काउंट दूंगा, तो मुझे पका ठीक हुआ है। आम मिला। जी जी आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो उसकी बुक्स मार्केट में जी, मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी जी। उसको वो पढ़ाई हम नहीं करते। 6 के बच्चे ने वो पढ़ना चाहिए। अच्छा। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्जाम है, बगैर कॉपी वाला जी जी। एग्जाम है, इसमें कोई पार्शलिटी नहीं होता। ऑनलाइन अच्छा। वाला एग्जाम नहीं है कि चलो ऑनलाइन दे दिया, किसी का हेल्प ले लिया, ऐसा नहीं है। ऑफलाइन ही हम्म। एग्जाम देना पड़ता जी जी। है। इस सोनाली एग्जाम मैम में ने ज्वाइन जो, किया है। हाँ सोनाली मैम बोलिए ना। एमसीक्यू पैटर्न में है। हाँ बोलो ना, बोलो, अभी आप बोलो। एमसीक्यू पैटर्न में है तो फिर एक बेनिफिट ये भी हो जाता है कि 12th के बाद जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बच्चों को देनी है, बहुत अर्ली एज से वो लोग एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर होने लगते हैं, तो वो भी अच्छा। आगे चल के बहुत एडवांटेज हो जाता है उनको। हम्म। सो हाँ कंटिन्यू। मैं फिर अभी आरएमएस के बाद नेक्स्ट जो इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है पूरे वर्ल्ड में, इससे टफेस्ट एग्जाम नहीं है पूरे वर्ल्ड में। वो माशाल्लाह। एग्जाम का नाम कोई बताएगा? स्टाफ कोई बताएगा? स्टाफ आरआईएमसी। सोनाली मैम आपको छोड़ के। बाकी बाकी लोग सब खाना खा रहे हैं क्या टाइम हो गया? 4:30 बज गए। आरएमसी का एग्जाम है, और वो आरएमसी का एग्जाम सर, ये जो लोग ज्वाइन किए हैं और जिनका वो वीवो है या कुछ नाम नहीं है, उनको नाम लिखने बोलो ना। नोट 11S किसका है? OnePlus किसका है? अननोन पार्टिसिपेंट नहीं चाहिए। उनको बोलना अपना नाम के साथ ज्वाइन करें। प्लीज रीनेम का ऑप्शन दे दो असद सर। इट इज फ्री, करियर गाइडेंस हमारी तरफ से फ्री है, लेकिन आप आपका नाम बताओ। ये आईजेड क्यू कौन है? उसको नाम देने को बोलो। वी शुड नो हु इज अटेंडिंग द लेक्चर। ओके। सैमसंग 11 था, वो भाग गया दिखता। Please take care, staff. Those who are joining, let them join, but they should have their mobile number or they should have their email ID registered. Okay. So I was talking about the best exam in the market right now. It is called RMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। जी। ये जो एग्जाम जो है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का, ये एग्जाम देहरादून में है। ये सेंटर पूरे इंडिया में एक स्टेट से एक बच्चा लिया जाता है। इंडिया में कितने स्टेट्स अच्छा। है बच्चों लोग? एनीबॉडी? इंडिया में कितने स्टेट्स है और कितने यूनियन टेरिटरीज है? टोटल स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला के 30-35 बच्चे लेते हैं वो। तो महाराष्ट्र जैसे एक स्टेट है, वहां से 2 बच्चे लेते हैं, जो बड़ा स्टेट है। जी। तो वो एग्जाम्स जो अभी जैसे आपने बताया ना, मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। मेरा पूरा रिप्लाई आपके लिए है। जी सर। जो आपने कहा कि आपका बच्चा 6th स्टैंडर्ड में, तो आपका बच्चा ये एग्जाम दे सकता है। सोनाली मैम ये एग्जाम दे सकता है ना आरएमसी का? बच्चा 6 में हो तो? सर अभी अगर एज क्राइटेरिया में है तो एग्जाम दे सकता है, बट सिलेक्ट नहीं होगा। उसका मेन एग्जाम जो रहेगा वो 7th स्टैंडर्ड में होगा। ओके। और आरएमएस जी, आरएमएस के एग्जाम? आरएमएस 5th स्टैंडर्ड में बच्चा एग्जाम देता है ताकि 6th में एडमिशन मिले, और 8th में ताकि 9th में एडमिशन मिले। ओके। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो आरएमसी का जो एग्जाम है ना सर, वो इतना टफ होता है आईक्यू लेवल उसका, कि उसका इंटेलिजेंस लेवल, एक बच्चा एक स्टेट से तो कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। आरएमसी का जो सिलेबस है, जिसमें मैथ्स है, इंग्लिश है, एप्टीट्यूड है, जनरल नॉलेज है, वो नॉर्मली एक एमएससी बीएड वाला टीचर भी नहीं सॉल्व कर पाता। अच्छा, माशाल्लाह। कम से कम 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचर को, तो पढ़ा सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ टीचर ट्रेनिंग भी फ्री है। देखो बच्चों के पास अभी अटेंशन स्पैन बहुत कम है। घंटों का काम मिनटों में होना चाहिए। तो घंटों का काम मिनटों में तब होगा जब टीचर ट्रेंड है। सही, बिल्कुल अगर टीचर खुद अपने आप को ट्रेन नहीं करता ना, तो मुश्किल है। सही है, तो वो ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। तो इतना आप आरएमसी का पेपर लेके सॉल्व करेंगे, 8th स्टैंडर्ड का है तो चलो मैं पढ़ा लूंगा, पॉसिबल नहीं है। वो खुद अटक जाएगा। मैं लाइव यूट्यूब पे लाइव हूँ, लाइव बोल रहा हूँ।
और मैं अच्छा। इसी को स्ट्रेस कर रहा हूँ कि लोगों को ये बारे में पता ही नहीं है। आप मुझे बताओ, आपको आरएमसी के बारे में पता था क्या? कुछ भी नहीं, आपने जितनी बातें बताई, हकीकत ये बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम था, जितनी बातें आपने बताई अब तक। अभी मेरे को हम बताने के है लिए 80 एजुकेशन स्लाइड है। फील्ड से रिलेटेड, अभी हम तो यहाँ पढ़ाते हाँ। हैं, यहाँ सऊदी अरब में मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप क्या ये पढ़ाते हो? बातें मुझे आज पहली बार आपके मुंह से पहली बार मालूम हो रही, किसी ने मुझे बताया। ये मैंने आज तक सुनी भी नहीं थी ऐसी बातें ये सारी। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह, आपके हिम्मत बहुत अफजाई बहुत के लिए शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। और इसीलिए मैं ये जिद्दा में आया था उम्रा के लिए, लेकिन मैंने ये जी, जी। केरला का जो एक केएमसीसी करके ग्रुप है, उन्होंने बोला कि आप करियर गाइडेंस करो, तो मैंने सोचा जी, कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे करे बात, क्योंकि बिल्कुल लोगों को बहुत पता अच्छा है नहीं है, सर ये। स्पेशली नॉन बिल्कुल रेसिडेंशियल इंडियंस अवेयरनेस को बहुत ज्यादा नहीं है। मालूम नहीं होता। जी, पेरेंट्स बिल्कुल रहते हैं। आप क्या अवेयरनेस नहीं पढ़ाते है। हैं सर यूनिवर्सिटी में? मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ सर, किंग खालिद माशाल्लाह सर। यूनिवर्सिटी में हूँ। कहाँ पे ये किंग खालिद? ये सऊदी अरब में आभा एक सिटी है सर। माशाल्लाह। मेरा इरादा है सर, एक तो जिद्दा या फिर रियाद में स्टार्ट करना। मक्का में भी कोई इंडियन एम्बेसी का स्कूल नहीं है, तो यहाँ कुछ स्टार्ट करने का इरादा है। इसी उसका एक्सप्लोरेशन में ये करियर गाइडेंस वर्कशॉप है। एक ठीक है आइडिया सर, मिलना चाहता कि क्या। अगर ऐसा है तो मैं आपको ज्वाइन कर लूंगा, मसला नहीं है। ये छोड़कर आपको ज्वाइन कर लूंगा। नहीं नहीं सर, आप छोड़ना नहीं है हाँ, अभी। मैं सबको नहीं यही बोलता हूँ कि क्योंकि किसी का जो एग्जिस्टिंग जॉब छोड़ना नहीं, मुझे हमारा स्टार्टअप अब मैं क्या है। है लेकिन आपको इसमें, हेल्प लगेगा सर आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर, एनीथिंग फ्रॉम माय साइड। अब मेरा क्या है, अब मेरा बच्चा, अब बताया ना, बड़ा बेटा है, वो 6 स्टैंडर्ड में है। अब मैं खुद तो यहाँ आपके से बच्चे के जो लिए है मैंने क्विट सर, कर। अभी आपके बच्चे के लिए 4 एग्जाम बताया, नवोदय बता दिया मैंने, जी, सैनिक जी, स्कूल बता दिया, और यूट्यूब पे लाइव भी आप जी, बाद में सुन भी सकते हैं इसको। आरएमएस बताया, आरएमसी बताया। ये तो हो जी, गया सर, ये अच्छा, डिफेंस के एग्जाम। इसके अलावा मैं आपको जी, बताता हूँ, मैं चाहता हूँ सोनाली मैम बताए। सोनाली मैम, ओलंपियाड्स के बारे में बताओ। यस सर। ओलंपियाड्स जो है सर, बेसिकली ओलंपियाड्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो कंडक्ट करती है, सिल्वर जोन एंड वेरियस अदर जोन्स जी, जी, ऑर्गेनाइज करती है। तो हम लोग जो है इंटरनेशनल लेवल का जो ओलंपियाड एग्जाम है वो प्रमोट करते हैं, दैट इज IMO, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड। तो जी, जी, IMO है, फिजिक्स के लिए होता है IPO। ऐसे जी, जी, जो इंटरनेशनल लेवल का ओलंपियाड एग्जाम है वो हम लोग प्रमोट करते हैं। इंडिया में उसका स्टेप ऐसे होता है, 4 स्टेप्स की एग्जाम होती है। वो एग्जाम होती है 4 स्टेप में। फर्स्ट स्टेट लेवल पे कंपटीशन होता है, अगर उसमें बच्चा क्वालिफाई करता है तो नेशनल लेवल पे कंपटीशन होता है। उसमें भी क्वालिफाई करता है फिर नेशनल लेवल पे कैंपिंग होता है उसका 5 से 6 दिन का। एंड देन फोर्थ स्टेज इज इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट करता है वो बच्चा। एंड काफी बेनिफिट होते हैं, एक तो बच्चे को कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, प्लस सर्टिफिकेशन बहुत मैटर करते हैं। जैसे हम लोग डिफेंस में कोर है NDA, तो आगे चल के SSB करके इंटरव्यू होता है, तो वहां पे भी सर्टिफिकेशन एंड ऑल कहीं ना कहीं थोड़ा मैटर रखते हैं कि यू हैव दिस सर्टिफिकेशन विथ यू, यू हैव वन इंटरनेशनल लेवल ओलंपियाड एंड वेरियस अदर थिंग्स। तो ओलंपियाड एग्जाम भी हम लोग प्रमोट करते हैं। बट वही एक चीज है कि हम लोग हमारे बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि जितने एग्जाम्स हो वो सब दो। इंटरनेशनल हमारा मेन टारगेट होता है, IMO जो है हमारा मेन टारगेट रहता है, बट स्टिल इंडियन टैलेंट ओलंपियाड करके भी ओलंपियाड एग्जाम रहता है। जैसे मैंने बताया, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो ओलंपियाड एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, तो इंडियन टैलेंट ओलंपियाड करके भी एग्जाम होता है, वो भी हम लोग सजेस्ट करते हैं। तो एक और एक्सपोजर मिल जाता है उनको एग्जाम देने का। तो इस तरीके से वेरियस एग्जाम से ओलंपियाड एग्जाम। एंड यहाँ इंडिया में 6 स्टैंडर्ड के लिए होमी बाबा करके भी एक स्कॉलरशिप एग्जाम होती है, जो 6 स्टैंडर्ड और 9 स्टैंडर्ड के बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। होमी बाबा इज स्पेसिफिकली फॉर साइंस स्टूडेंट्स ओनली, लाइक साइंस ओनली। ये लिख लो सर, आपके लिए बहुत अच्छा एग्जाम है, हमारी तरफ से गिफ्ट है आपको। होमी बाबा का एग्जाम लिख लो आप, इसका बुक खरीद लो अमेजोन के फ्लिपकार्ट पे, और हम लोग इसका कोचिंग भी देते हैं। अगर ऑनलाइन ज्वाइन करना तो ज्वाइन भी कर सकते हैं बच्चा। लेकिन ये एग्जाम अगर आपने दिया ना, तो आपके बच्चों को नीट और JEE आसान जाएगा। ठीक है सर, ये इंशाल्लाह सोनाली मैम कंटिन्यू करो। 6th में, 9th में और 11th में होता है ना? कब होता है? 6th और 9th में होता है सिर्फ। अच्छा सर, एक सर्कुलर डाल दो ग्रुप में, इंस्पायर करके एग्जाम होती है, 8, जितना 9, स्टाफ है सबको ज्वाइन करने बोलो। अच्छा सर, जो उधर है ना, सारे स्टाफ को ज्वाइन करने बोलो, नहीं तो सैलरी कट होगा बोलना। हाँ सर। सारे स्टाफ को ज्वाइन करने बोलो। नॉन टीचिंग और स्टाफ तो एक कंपलसरी, एडवांटेज ये सब एग्जाम टीचिंग स्टाफ अगर देने इसलिए लेक्चर नहीं होते। हाँ और एक बोलिए बोलिए। एडवांटेज ये सब एग्जाम देने का ये हो जाता है ना, जैसे होमी बाबा इज पर्टिकुलरली फॉर साइंस, IMO इज मैथ्स,
ऐसे IOQP इज फिजिक्स। तो जब बच्चा इसके लिए प्रिपेयर करता है, 2-3 बार एग्जाम देता है, तो पता चलता है कि फिजिक्स में इंटरेस्ट है या मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो बहुत अर्ली एज से उसका इंटरेस्ट किस तरफ है वो भी समझ में आने लगता है। जो हम लोग बेसिकली 10th या 12th स्टैंडर्ड के बाद करना शुरू करते हैं कि इंटरेस्ट कहाँ पे है, तो करियर क्या होना चाहिए, तो अर्ली स्टेज से अगर एक्सपोजर मिलता है तो वो भी एक क्लियरिटी मिलती जाती है, तो आगे का करियर डिसाइड करने में और ज्यादा आसानी हो जाती है। जी जी। यस सर। कंट्री है ना, इस्लामिक कंट्री में एस्ट्रोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एस्ट्रोनॉमी। और एस्ट्रोनॉमी का बारे में इनको पता ही नहीं कि ओलंपियाड होता है, और फिजिक्स के लिए एस्ट्रोनॉमी पढ़ना चाहिए। असद सर भी बात कर सकते हैं इस पर। सोनाली मैम बात करो, आप, मेरे को एक कॉल आ रहा है। 12th स्टैंडर्ड के बाद है ना, अंडर ग्रेजुएशन अगर एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है, एस्ट्रोफिजिक्स करके स्पेशलाइजेशन होता है, कोर्स होता है, करियर बना सकते हैं आप एस्ट्रोफिजिक्स में, विच इज वेरी मच इन डिमांड। क्योंकि अभी जो हम लोग यूनिवर्स के बारे में जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो इतने सारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जो लॉन्च हो रहे हैं, इसरो भी लॉन्च कर रहा है, नासा भी, एंड बहुत सारे अदर चीजें जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, तो एस्ट्रोफिजिक्स इज प्लेइंग मेन रोल उस चीज में। तो एस्ट्रोफिजिक्स एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर किसी को एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है प्लस फिजिक्स पे इंटरेस्ट है, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके ये एक होता है। प्लस उसमें मैथ्स इंपॉर्टेंट है, फिर उसमें मैथ्स में भी इंटरेस्ट होना चाहिए, तो आपका कैलकुलेशंस एंड ऑल अदर थिंग जो है वो जाता है। तो अभी हम लोग जो है लेसन नॉन करियर ऑप्शंस जो है वो भी प्रमोट कर रहे हैं कि ठीक है, इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर तो सभी को पता है कि इंजीनियरिंग क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है, कैसे, बट हर कोई वो नहीं बन सकता। मैम इसका आप स्लाइड बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग भूल जाते हैं। हमारे राष्ट्र प्रेसिडेंट जो है ना, APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम साहब ने भी CDS दिया था, लेकिन SSB नहीं हुआ। मैं सेलेक्ट हुआ था, मेरिट आउट हुए थे, लेकिन उनको उनके प्रोफेसर एक मिस्टर सुब्रमण्यम थे, जिन्होंने उनको गाइड किया एस्ट्रोफिजिक्स के लिए, और वो उन्होंने एस्ट्रोफिजिक्स में ग्रेजुएशन किया करके इतना बड़ा आदमी बने। तो एस्ट्रोफिजिक्स का इंपॉर्टेंस लोगों को पता नहीं, और एस्ट्रोफिजिक्स बच्चा तभी लेगा जब वो एस्ट्रोनॉमी का ओलंपियाड देगा। हाँ, एस्ट्रोनॉमी का ओलंपियाड होता है, वो 8th स्टैंडर्ड से बच्चे अपीयर कर सकते हैं, तो एक वो भी है। एंड हमारे यहाँ पे लिख लो सोनाली मैम, मैं आपको इसलिए स्ट्रेस कर रहा था कि एस्ट्रोनॉमी मदरसा में पढ़ाया जाता था पहले, अभी उन्होंने बंद कर दिया। तो अभी ना स्कूल पढ़ाती है हमको। देखो हमारा दुबई का भी क्या डायलॉग है, एजुकेशन बियॉन्ड स्कूलिंग, राइट, वी टीच थिंग्स व्हिच इज नॉट टॉट इन स्कूल। तो उसमें एस्ट्रोनॉमी को आपको बहुत ज्यादा बात करना पड़ेगा, इसका अलग स्लाइड बनाना पड़ेगा। यस सर। और एस्ट्रोनॉमी जो पॉलीमैथ लिखता ना मेरे बारे में, आज आप नहीं थे, थोड़ा लेट आए, तो तब मैं बोले पॉलीमैथ, लोगों को लगता है पॉलीमैथ मतलब मैथ से कनेक्टेड है। पॉलीमैथ का मैथ से कोई कनेक्शन नहीं है। पॉलीमैथ वो लोग हैं जो एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, याद रखो। एरिस्टोटल हुआ, गैलीलो हो गया, न्यूटन हुआ, और इब्ने खालदून, आपने सुना होगा ना सर, इब्ने खालदून का नाम, ख्वारिज़मी, इब्ने ख्वारिज़मी जिन्होंने अलजेब्रा बनाया, ये सारे लोग जो है ना, ये सारे के सारे लोग जो है वो एस्ट्रोनॉमी पढ़ा है बच्चों को। कंटिन्यू स्लाइड्स कंटिन्यू करो ना, स्लाइड्स। सोनाली मैम स्लाइड कंटिन्यू करो। जी सर। स्लाइड दिखाओ। आई गेस असद सर है होस्ट में। असद सर स्लाइड्स कंटिन्यू करो। स्लाइड शेयर नहीं हो रहा क्या असद सर? हेलो असद सर। हाँ सर, कर रहा हूँ। तो एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात कर रहा था। क्लास लाना ലെവൻത്ത് ആണ്. അതാണ് കുട്ടികളെ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ എക്സാം നടന്നുകൊടുക്കുക, അതാണ് കുട്ടികൾ.
ഞാൻ പിന്നെ ഡേറ്റ് വെച്ചോണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. हाँ इसी पे यही स्लाइड यहाँ से स्टार्ट करें. सोनाली मैम कंटिन्यू. जी, तो अभी इसमें थोड़े से अपडेशन इंग्लिश है, जैसे सोनाली हम मैम, लोग नेशनल इंग्लिश. एजुकेशन. सोनाली मैम इंग्लिश, यहाँ कुछ लोग सुन रहे हैं आपका स्पीच. Right, यहाँ sir. मलयालम में ना तो इंग्लिश में बात करना पड़ेगा. Yes, sir. कंटिन्यू इन इंग्लिश. So we are targeting few courses standard wise, like, you know, we keep grades in consideration and age of student, but what each student should be like, you know, well known with which subjects. So we try to do this. This is going to be updated soon because we are going to, like, you know, plan our curriculum according to national education policy. That is the new education policy which has come in. So this is till, if the student is still grade second, he should be well known with mental maths, power maths, and Vedic maths. Maths is very important because we believe that maths is language of universe. You take any course, any profession, if you're not good with maths, it will be very difficult for you to survive, right? And we believe that at early age, if there is, like, you know, if you have good hands on maths, it will not be a pain area for you. Like, you know, it will not be a tension for you that maths, I'm phobic to maths, I'm not understanding maths. So from early age, we are going to concentrate on maths. So till second standard, we are going to concentrate on Vedic maths, power math, and mental maths. With that, English also, English studio, we have English studio with us. So MEAP, that is maths, English, aptitude, and psychology. These are the four main areas that we should concentrate on till grade second, third. So would you like to add anything? Yeah. इसमें यानी മൂന്ന് കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ, മനസ്സിലാവില്ലേ? First time children from first standard should learn mental maths. Second standard power maths. Third standard Vedic maths. Vedic maths का slide किधर है मैम? Next slide. So this mental maths, Vedic maths is very important. हाँ, ठीक बात भी आएगा, कोई बात नहीं. Then there are various exams which I already spoke. You are in which standard? Fifth standard, no? If you are in fifth standard, you can attempt Navodaya, Sainik School, RMS, Homi Baba. There are scholarship exams. Best exam is Homi Baba exam. वो स्लाइड बनाना चाहिए जो अपने पास इसका सर था ना, सरजीत सर के पास था वो पीपीटी, जहाँ पे बच्चा कैन गिव होमी बाबा एंड कैन रीच नासा ऑल्सो. आज क्लिशन टेल वाला क्या? नहीं, अभी जरूरत नहीं है उसका. ये अभी तो ये 80 स्लाइड ही खत्म नहीं होंगे, लेकिन वो याद रखो सरजीत सर से मंगाना है. इसमें एक बच्चा, इफ ही और शी राइट्स होमी बाबा एग्जाम, they can directly reach to NASA. How many of you know NASA? Staff, please write about NASA. NASA के बारे में बताओ, full form of NASA. Do you know the full form of NASA? And where is NASA? NASA किधर है, उसका full form बताओ. Anyone? Where is NASA and what is the full form? No one chat box में. असद सर नासा कोई लिख रहा नहीं. चैट टू होस्ट चाहिए सिर्फ. सर वो दिख नहीं रहा है किसी को. So NASA stands for National Aeronautics and Space Administration. हाँ, चैट फॉर एवरीवन कर दो नाविद भाई. उसके राइट सिर्फ होस्ट के पास है. चैट फॉर एवरीवन कर दीजिए तो सबका दिखेगा. नवीद भाई को होस्ट बनाया. पीपीटी की स्क्रीन बता रहा हूँ ना, तो यहाँ से मुझे करते नहीं आएगा. ओके ठीक है सर. चैट में मुझे नहीं दिख रहा. चैट फॉर एवरीवन करो आप. विलास पाचंगे सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर.
वेलकम सर। किसका है पूछो ना असद सर। OnePlus किसका पूछो। एक OnePlus है CPH2381, उसको रीनेम करने बोलो। और Note 11S है, उसको भी रीनेम करने बोलो। Note 11S। ओके, नासा स्टैंड्स फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम लोग ये बता रहे थे, वी वर स्पीकिंग दैट इफ यू गिव होमी बाबा एग्जाम which is conducted in 6th standard, 9th and 11th, you can directly reach the America. So the exams are conducted in 6th, 9th and 11th. Can you elaborate more, Sonali ma'am? Yes, like because when you apply for Homi Baba examination, you are specific to science. Like you start preparing yourself specific to science, and you get various scholarships. If you qualify, you get scholarship. Also, you have access to science labs all over India. All government national science lab, you can get access to that thing. And like in Homi Baba examination, it is not only written exam. Written exam is first step, but second step is project. You practically need to make one project and demonstrate. So that gives you even a wider exposure towards science. So that also improve you and give you chance to go ahead. So when in future, when you go ahead and you are interested in NASA or something, you can show that in standard 6th only I did this project and all. And once you do practically project, you tend to do project every year. So that improves your skill. That is what I believe. So Next slide. Anybody can ask questions also. If you have any difficulty, unmute yourself and ask question. Somebody is joined with Note 11S. Who is Note 11S? Check करो. प्रीति जरा म्यूट कर. प्रीति म्यूट कर. प्रीति म्यूट कर. The next slide. So we already spoke about RMS, RMC, Sainik School, Navodaya, Homi Baba scholarship exams, and Olympiad exams. Olympiad ke liye there is a book called Oswald publication. It is one of the best books available in the market. So you should also know that. Next one. So somebody said you are in 11th standard, no? See, those who are in 11th standard can give all these exams. Can you read the exams? Read loudly. Then IPMAT IIM, then CUET, then MHT CET, then NEET, then and Inspire. Inspire is a scholarship given by Government of India. 1%, if you come among the 1 percentile people in a given district, you're from Palakkad district, no? Then if you give that exam there, then you will get an Inspire scholarship. Amount is 80,000 rupees is sponsored by the Government of India. The collector will give you the amount. Now, which exam you want to know? Which exam you know about? Are you aware of JEE? JEE exam na badi are you? See, JEE exam is conducted twice a year. And it is also important for technical entry. You can join Army, Navy, Air Force also by giving JEE. So through JEE, if you get a good score, you have to give the exam in 11th and 12th standard, CBSE syllabus, NCERT syllabus. Then with that score, you are being selected in JEE Advance. 16 lakh people give the exam in a year. Only 2 lakh people will be selected from mains to advance. And in that 2 lakh people, when you give the advance exam, then you are selected to India's best colleges called IITs. What is that called as? IITs. Then REC. Palakkad has got REC. Palakkad has also got NIT. So in this colleges, if you want to get admission,
you have to give, other than Kerala entrance, you have to give JW please, and JW advance. Okay. Next exam is IP MAT. बात करें सोनाली मैम, what is IP MAT? Yes, sir. IP MAT exam is basically like, IIT is best institute in India for engineering. IIM is best institute in India for management. So there are total 20 IIMs all over India, but very few people are aware that आपके PPT में वो IIMs का लिस्ट है क्या? ये PPT में IIM का लिस्ट है क्या? नहीं सर. हाँ, ये सब डालना पड़ेगा. मार्च 5 को बहुत बड़ा लेक्चर है, तो उसमें सब टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया. Yes, sir. Continue. So out of 20 IIM in India, I will tell it short. 1 minute. What a parent though? 11th. Uda, see, if you give after 12th, if you give an exam of IIM, then in Indore you get an admission. There are only 100 seats, so you can do your BBA plus MBA 5 years, and you will get a degree of from 4 different countries: India, New Zealand, UK, और एक कौन सा कंट्री है मैम? IIM का खुद का. You'll get Belgium. 4 degrees. And you will get a package of more than 40 lakhs per year. But then again, the entrance is very tough. They only take how many seats? All over India, 100. Like that, the present government has got 4 more colleges: Rohtak, Bodh Gaya, Jammu, और एक कौन सा रह गया? Ranchi. These 4 are new colleges, but many Kerala girls are there studying. One of my friend from Dubai, his daughter is studying in Rohtak. So these 4 colleges have just come up now, but the best college is Indore IIM. IIM Indore is the best college for BBA and MBA. That is, she was talking about IIM, second one. Now third, Sonali ma'am will speak about CUET. Yes, Sonali ma'am. Yes, CUET is basically the concept started last year only. That is Common University Entrance Test. This is basically like, there are many universities in India. There are 1,000+ universities in India. So for admission in various universities, you had to appear different, separate entrance exam. But now what government is doing is, they are bringing all universities under one roof. So they are taking one entrance exam, and through one entrance exam, you can opt for many universities at one go. Like you need to apply only for one entrance exam, and you can give many, apply for many universities through that exam. So through this CUET exam, there are many universities which you can apply for, like Aligarh University, you can apply for through CUET. TIS, Tata Institute of Social Studies, that you can apply through CUET examination. So this is the examination through which you can apply for 90 universities. There are 4 papers that you need to apply for. And through this examination, 90 universities and all courses under those 90 universities you can apply for. You can apply for engineering also, BA, BCom, all type of courses through this entrance exam. See, I'll tell you, अलीगढ़ का जो एक स्क्रीन पे है क्या आपके पास इसमें पीपीटी में? अलीगढ़ के जो अलग-अलग एंट्रेंस एग्जाम थे ना? Yes, sir. असद सर को दिखाने बोलो ना. See, Aligarh Muslim University conducts various entrance exams. I come from Kerala, and there is an Aligarh Center in Kerala. Do you know that? You had come to my house, na? Amir's house. From Amir's house, only 12 kilometers above, there is a college called Aligarh Muslim University. It is near to Charugara. And you can do your MBA in only 20,000 rupees. 20,000 രൂപയ്ക്ക് MBA ചെയ്യാൻ പറ്റും. Only 20,000. ഒരു പൈസ ചെലവില്ല. അടിപൊളി കോളേജാണ്. പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, ആണുങ്ങൾക്ക് വേറെ സെപ്പറേറ്റ്, ഉള്ളിൽ പള്ളിയുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് ഫുൾ ഇയറിന്റെ ഫീസ് മാത്രം 20,000 rupees, including food 20,000 rupees. But you have to give Aligarh entrance. That is why career guidance is important. People don't give the entrance. See, if you give Aligarh entrance, first choice is Aligarh, which is there in Lucknow, in UP. Second choice is Kolkata. Third is Kishanganj in Bihar. And fourth is Kerala. But Kerala people only, they don't know about Aligarh in Kerala. Sonali ma'am, मैं बात जो बोला समझा क्या आपको? स्लाइड है क्या उसका आपके पास? हाँ सर.
असद सर स्लाइड देखो, अलीगढ़ का स्लाइड है क्या? ये बहुत जरूरी है। और जामिया का स्लाइड भी बोला था मैंने आपको, जामिया का स्लाइड है सर, इसमें है सर। हाँ वो क्योंकि अभी जो मेरा 5th को होने वाला है ना लखनऊ में प्रोग्राम, उसमें भी ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये किसी को मालूम नहीं रहता। सलमान भाई का 20 MBA जी हम बचे थे। ये आर्मी इंस्टीट्यूट है आगे। हाँ अलीगढ़ आया ना, अलीगढ़। स्क्रीन लगाना डा, इसको स्क्रीन बड़ा कर सकता क्या सर? थोड़ा बड़ा करो। इसका पैम्पलेट नहीं बनाया ना आपने मैम? नहीं पूरा नहीं दिख रहा मुझे, मोबाइल पे नहीं दिख रहा। रहना छोटा रहना तो। हाँ ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ पढ़ो ना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कानाडा, अलीगढ़ स्क्रीन लगाना। Aligarh Muslim University shall continue with its old practice of conducting its own independent entrance tests for selected courses. For some courses, it is adopting CUT undergraduate. Undergraduate means after 12th. This is in keeping with the practice of last year. AMU, the full form is Aligarh Muslim University, has its own entrance exam application process for 2023 and has started course-wise dates. BTech, and the date and then BA, BLLB, BCom, and BA. This BLLB is also there in Kerala. So these are the various exams. So there are various exams conducted by, ये लिखना है आपके PPT में सोनाली मैम। हाँ सर। 4 ब्रांचेस इनके, एक अलीगढ़ खुद जो यूपी में है, एक किशनगंज बिहार में, एक कलकत्ता में और चौथा केरला में। ये भी आपकी PPT में आना चाहिए। 4 लिख लो आप, बाद में याद रखो। ओके सर। हाँ सर। नेक्स्ट इसके आगे ही जाओ मैम। सर पीछे पीछे मत जाओ, ये जो लिखा ना अली क्या था उसके आगे जाओ। हाँ ये कौन सा था? नेक्स्ट के बारे में बताओ ना सोनाली मैम। नेक्स्ट जी सर। नेक्स्ट एग्जाम जो है, बेसिकली अगर आपको इंटीग्रेटेड कोर्स पे एडमिशन चाहिए, दैट इज MSc इंटीग्रेटेड कोर्स, 3 साल का BSc विद 2 years MSc एग्जाम कोर्स। तो ऐसे इंटीग्रेटेड कोर्स में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए नेक्स्ट करके एग्जाम है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए 12th स्टैंडर्ड में जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये होना जरूरी है। एंड आप अगर ये क्वालिफाई करते हो तो आपको एडमिशन मिलती है नाइसर में, विच इज इन भुवनेश्वर। नाइसर करके जो इंस्टीट्यूट है, दिस इज वेरी रिनाउंड इंस्टीट्यूट एंड लोकेटेड इन भुवनेश्वर। एंड वेयर इज भुवनेश्वर? आस्क द स्टाफ को पूछो भुवनेश्वर किधर है। स्टाफ में से कौन बताएगा क्या भुवनेश्वर किधर है? कोई स्टाफ बोलेगा तो उसको बोलो, उसको 1 दिन का सैलरी क्रेडिट करेंगे। कोई जल्दी बताएगा कि भुवनेश्वर किधर है? चैट बॉक्स में पहला रिप्लाई आना चाहिए। किसी का आ रहा है क्या? असद सर? सर ओडिशा में है, ओडिशा में। हाँ कौन बताया? 5 होंगे सर। थैंक यू सर। नहीं सर ये बहुत मुश्किल है, लोगों को पता नहीं है सर ये सब। हम जो बातें बता रहे हैं ना सर, ये दुनिया को पता नहीं है। और ये करियर गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे सब बोलते हैं हमको डॉक्टर बनना है, नहीं तो इंजीनियर बनना है। और ये मालूम है उड़ीसा में अपना और एक कॉलेज है जहाँ पे अपना एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है, मोमिन जी, ताहिर मोमिन का बेटा अमन मोमिन। वो कौन से इसमें सेलेक्ट हुआ है असद सर? उड़ीसा के एक कॉलेज में सेलेक्ट हुआ। हाँ कौन बोल रहा? प्रीति। हाँ उसका पोस्टर भी नहीं प्रीति तरह सैलरी कट पोस्टर नहीं करके। वो भी ऐड करो सोनाली मैम। यस सर। उसमें आपके प्लास्टोमर ना, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या? सीपेट। प्रीति इस कॉलेज का नाम बोल, तेरा को 1 दिन का सैलरी क्रेडिट करेंगे। जल्दी बोल। सीपेट। यस मैम कंटिन्यू।
यस, तो उनको एडमिशन मिलता है इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए एंड तो फिर केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स इसमें से कोई भी स्पेशलाइजेशन वो ऑप्ट कर सकते हैं. विद दैट दे आर एलिजिबल फॉर दिशा फाउंडेशन स्कॉलरशिप आल्सो. इफ दे क्लियर दिस एग्जामिनेशन दे आर एलिजिबल फॉर दिशा फाउंडेशन स्कॉलरशिप आल्सो. लेकिन फिर आपको मेंशन करना पड़ेगा ना दिशा फाउंडेशन स्कॉलरशिप क्या है. हाँ, स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो ₹60,000 थ्रू दिशा प्रोग्राम, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Also scholarship they receive is 20,000 rupees per annum as a summer internship. Great. तो ये एग्जाम के थ्रू इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन तो मिलती है प्लस स्कॉलरशिप भी मिलता है. ठीक है ना. अच्छा ना, इसके बाद अभी आइसर के बारे में बताओ ना. आइसर का है आपके पास? आइसर ने बटी आ रही हो. सीपेट का नाम बता देती हूँ. CIEPET is Central Institute of Petrochemicals. Central Institute of Petrochemicals. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. गल्फ पे ना, गल्फ में जो है ना पेट्रोकेमिकल का बहुत बड़ा प्लांट है ना. अभी मैं नमाज पढ़ रहा था तो रायसोनी में पढ़ा हुआ एक लड़का मिला जो यहाँ पे पेट्रोकेमिकल कंपनी में काम करने आया. सोनाली मैम, एरिया के भाई एरिया अभी पेट्रोकेमिकल पेट्रोल ज्यादा मिलता ना यहाँ पे अभी. यस सर. गल्फ कंट्रीज में तो यहाँ पे बहुत फायदा हो जाता है उसका. तो यहाँ लोगों को पता होना चाहिए कि पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम के भी इंजीनियरिंग होते हैं और वो जॉब ओरिएंटेड होते हैं और वो पढ़ने के स्कॉलरशिप एग्जाम भी होता है. ऐसे लोगों को पता होना चाहिए. कंटिन्यू. ये स्कॉलरशिप एग्जाम है युवा स्कॉलरशिप. युवा स्कॉलरशिप एग्जाम है विच इज एन तो बहुत सारी टाइप की स्कॉलरशिप एग्जाम्स होती है जो अभी इंडिया में अवेलेबल है. सो युवा स्कॉलरशिप जो है इसके फॉर्म्स अभी करंटली ओपन है. तो वी आर प्रमोटिंग दिस स्कॉलरशिप एग्जाम बिकॉज स्टूडेंट्स मे नो एंड देन दे कैन अप्लाई. एंड इफ दे क्वालिफाई उनको 2 लाख रुपए तक का जो सपोर्ट है वो मिल सकता है उनके एजुकेशन के लिए. 2 लाख रुपए तक का सपोर्ट मिल सकता है उनको उनके एजुकेशन के लिए. एंड इसमें जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है दैट इज 90% लाइक 90 परसेंटाइल उनका स्कोर होना चाहिए 11th-12th बोर्ड एग्जाम में या फिर 80% मिनिमम. एंड दैट टू दिस एकेडमिक ईयर जो अभी इस साल बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनका. तो ये एक मेन क्राइटेरिया है इसमें. बाकी तो ठीक है स्कॉलरशिप एग्जाम है. प्लस देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज है इंडिया में एंड एवरी यूनिवर्सिटी हैव देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज. तो ये भी एक यूनिवर्सिटी है NMIMS डीम्ड यूनिवर्सिटी. बेसिकली अच्छी यूनिवर्सिटी है. तो वहां पे भी अगर बीटेक में या इंटीग्रेटेड कोर्स MBA का इंटीग्रेटेड कोर्स इसमें आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए यू कैन अप्लाई फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम. इनका एंट्रेंस एग्जाम रहेगा मई में. सर इसके पहले वाला स्लाइड उसमें 1-2 इम्पोर्टेंट था क्रैश कोर्स. ये जो है नहीं, इसके पहले आपने जो दिखाया था वो ISI का जो इसके पहले ISI राइट हैंड साइड में ISI इसके बारे में था, इंस्टीट्यूट के बारे में. हाँ इसके बाद इसके पास ठीक है AIT करके भी एक इंस्टीट्यूट के बारे में था इसमें. तो AIT इंस्टीट्यूट इज बेसिकली यहाँ पे कोई उसको अपन अवॉइड करेंगे बिकॉज हियर इज नोबडी फ्रॉम द आर्मी. ये वाला ISI. नेक्स्ट स्लाइड ले लो. नेक्स्ट स्लाइड ले लो. ये वाला राइट हैंड साइड जो है ISI. दिस इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो वेरी गुड एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए बेसिकली स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट. एंड स्टैटिस्टिक्स जो है ये डे बाय डे जैसे हम सबको पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है बिकॉज इफ यू नीड टू एनालाइज एनीथिंग और समथिंग तो स्टैटिस्टिक्स कम्स इनटू द पिक्चर. तो ये जो है ये फोकस्ड है ऑन मैथ्स एंड इसका भी एंट्रेंस एग्जाम होता है.
And specialization, like, you can do your bachelor's in statistics honors, yes, bachelor's in maths honors. तो इसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी होता है अगर आपको यहाँ पे एडमिशन चाहिए तो, which has its कोलकाता and it has its campus in Bangalore. तो ये भी एक इंस्टीट्यूट है जिसके लिए बच्चों ने लगाई है if they are aiming at maths as their career. ये चेन्नई में ना, चेन्नई में भी है ना CMI, बैंगलोर में भी है, हाँ, बैंगलोर, चेन्नई और कोलकाता. 1 अगस्त मैथ्स ले इंटरेस्टेड है 1 चेन्नई में CMI है सर, चेन्नई में Chennai Mathematical Institute is there, where every 1 August they conduct an entrance exam, and if you clear that exam, you get scholarship to study further, almost free. Yes, ma'am, continue. Yes, sir. अच्छा सर, तो next slide. ये ADCI हुआ जी सर. इस नेक्स्ट स्लाइड, ये भी हो गया सर. अनीस सर, हाँ, continue ना. This is a boy who from Hyderabad who cleared the exam. Now these are the results of ये बताओ ना, एयरमैन ASCC. ये हमारा सक्सेस स्टोरी है. ये जो बच्चा है पंकज खोले, इंग्लिश मैम, इंग्लिश, ये जो इंग्लिश, बच्चा है इंग्लिश. इसने, सोनाली मैम, इंग्लिश. yes sir, yes sir. The student's which name is exam he Pankaj cleared? Khole. So he joined, sir. He हाँ, joined बताओ ना, which Anis exam? Academy for NDA classes. He joined Anis Academy to prepare himself for NDA, but he could not clear his NDA, like, SSB and all. So he joined Airman X group. So, like, not at officer level, but group B level. So he joined defense at Airman X group, that is B level. But then he got internal promotion through ACC examination. ACC examination is basically in defense, which only like people who are already serving in Indian defense can apply for. So he applied for ACC examination, and now he is officer in IMA, that is Indian Military Academy, in Army, Indian Army. So, like, if you're not getting what we suggest our student is, if you don't crack your examination at officer level or something, go for B level. That's okay. With your performance and internal examination, you can become officer one day. So dedication is very important. So, Anisa. निखिल का बताइए. निखिल, ये अग्निवीर का एग्जाम है. अग्निवीर और अग्निपथ थोड़ा डिटेल में इंग्लिश में मैम. अग्निवीर एंड अग्निपथ. Agniveer and Agnipath concept that is started by Indian government. Like, there is a lot of gap, like requirement in Indian armies at huge. There are more vacancies, but intake is not that much. So they have started with Agniveer, Agnipath, Agnivayu concept. So what they do here is they conduct entrance exams, medicals, and fitness examination. They select people, they train, and students work for 5 years. After 5 years, they can get retirement. Like, they. I will continue. Yes, sir. See, if a boy or a girl after 12th don't want to study from the parents' money, they have to give an exam. When they clear that exam, there is a physical test for them. After the physical test, if they get selected through Agniveer or Agnivayu in the Indian Army, Navy, Air Force. So it is only a temporary selection for 5 years. In this 5 years, 3 years will go in your getting the degree. While getting the degree, they will pay you a stipend of almost 12,000 rupees a month. 12,000, no? So, Sonali ma'am? Sonali ma'am, are you there? 12,000 a month, you'll get money. And after 3 years, if they don't select you, you will get around 10 to 20 lakhs. And in 3 years, you can also do your graduation. After graduation, you will be eligible for any of the exams through which you can become an officer in the Indian Army, Navy, and Air Force. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല, മലയാളത്തിൽ പറയാം. 12ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട കുട്ടിയാണ്, പഠിക്കാൻ പൈസ ഇല്ല. ഈ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഇത് അഗ്നിവീർ, അഗ്നിപിത്ത്
എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ 5 കൊല്ലത്തിലും ഓല് ഇന്ത്യയുടെ ആർമി നേവി എയർഫോഴ്സ് ചേർക്കുള്ളൂ. 5 കൊല്ലം. 3 കൊല്ലം നമ്മൾ എന്തായാലും ട്രെയിനിങ്ങിന് പോലോ. 3 കൊല്ലത്തിൽ ഓല് 12,000 രൂപ തരുകയും ചെയ്യും, എല്ലാ മാസം സ്റ്റൈപ്പൻഡ് തരുകയും ചെയ്യും, പ്ലസ് പഠിപ്പ് കഴിയുകയും ചെയ്യും. ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും. ഈ 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് റിട്ടയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെടുത്തില്ല 75% ആൾക്കാർ എടുക്കൂല, 25% ആൾക്കാർ എടുക്കുള്ളൂ. എടുത്തില്ലെങ്കിൽ 10 to 20 ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും പൈസ, 5 കൊല്ലം ജോലി ചെയ്ത കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തു പോയാൽ എവിടെയും ജോലി കിട്ടും. 5 കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ആർമി നേവി എയർഫോഴ്സിൽ. ഇത് അടിപൊളി സംഭവമാണ്. ഇത് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകാതിട്ട് 200 കോടിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആൾക്കാർക്ക് എത്തിച്ചു ഇന്ത്യയില്. ആൾക്കാർ ഒരു പ്രാവശ്യം ജോലി കിട്ടിയ 15 കൊല്ലം ജോലി കിട്ടണം എന്നുള്ള പ്ലാനാണ്. പക്ഷെ ഈ 5 കൊല്ലത്തിന് ബെനിഫിറ്റ് നല്ല ബെനിഫിറ്റ് ആണ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ. ഞാൻ പറയുന്നത് പള്ളിയിലും മിമ്പറിലും ജുമാലും ഇത് പറയണം, എന്നാലേ കുറെ ആൾക്കാരെ കിട്ടുള്ളൂ. യെസ് മാം, കണ്ടിന്യൂ. നെക്സ്റ്റ് स्लाइड. हाँ, इसके बारे में बात करो ना. ये ओलंपियाड एग्जाम्स है ना? ओलंपियाड एग्जाम एटेंडो. Anyone who has written Olympiad exams? So if you clear Olympiad exams, then you can also go to NASA. You can easily go to NASA. That is the importance of clearing Olympiad exams. Next slide. These are the children who got selected for technical entry. बात करेंगे सोनाली मैम? Yes, sir. English. Yes, sir. Basically, when students approach us for they want to go in defense, and also they are aware, many students are aware about NDA as an option to go in defense, right? But there is another option also through after your 12th standard only. There is second option also to go in Indian defense, that is through technical entry. Technical entry is basically when you clear your 12th board exam, and if you have applied for JEE examination, then you can apply for this examination. In 12th board exam, you should score minimum of 70% in PCM, physics, chemistry, maths. If you have scored minimum 70% in physics, chemistry, maths, and you have applied for JEE examination, you can apply for this technical entry. There are 2 separate entries. One is Army, technical entry Army, technical entry Navy. And if you get selected, you are directly called for SSB interview. You don't have to appear for any separate written examination. You're directly invited for SSB. If you clear your SSB medical and then documentation, and then you can join Indian Army or Navy through technical entry. In technical entry, you're more into engineering work. NDA is more about frontline officers and all. But through technical entry, it is more about being engineer in defense. You are engineer, and the degree you get is also BTech degree. So there is a training of 4 years. Navy students go to SZ Malla, that is in Kerala, and Army they get trained in Army. They get Army they get trained in 2 years in CME, College of Military Engineering in Pune, 1 year in Gaya, and 1 year in IMA Dehradun. Yes, sir. Anis, sir. So these are our 3 students who got qualified for. Hey, one of the parents, both Kerala, they have just finished the 12th standard. So those who have finished the 12th standard, they should know that they have to write JEE exam, which is conducted twice a year. And through that exam, you can be selected for Indian Army, Navy, and Air Force. Now, this boy got selected through MHCT. Kerala government also conducted an exam which is called Kerala CET. And this boy got selected in IIT Guwahati. So if you want to go to IIT, then you have to write which exam? The exam that you have to conduct is IIT में जाने के लिए बचाओ स्टाफ अफरीन मैम, IIT में जाने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है बच्चों को? JEE. हाँ, JEE. IIT के अलावा और कहाँ से आ सकते हैं? प्रीति के अलावा सब बाकी मर गए क्या?
आईआईटी के जो एग्जाम है, आईआईटी में अगर नहीं मिला तो बच्चे कहाँ जा सकते हैं जेडब्ल्यू का एग्जाम देके? एनआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी। कौन बोल रहा है एनआईटी, ट्रिपल आईटी? जेएफआई, तानिया सर, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट। चानिया, तेरा नाम कुछ अलग ही आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोगों को म्यूट कर आईसर दे, में बोला जा किसका आवाज सकते, आ रहा है? जेई के एग्जाम के मार्क्स पे ये आईसर जा शंकर सकते हैं। वालसरे कौन है? शंकर वालसरे कौन है? हाँ, ठीक है, कंटिन्यू मैम। Through JEE examination, you can also join ICER. ICER is basically for research, Science Research Institute. So through JEE, you can also join ICER Institute. आइसर पूरे इंडिया में कितने आइसर है प्रीति? टोटल आइसर्स इन इंडिया हाउ मेनी आर देयर? 12th के जो देखना मोहन ഒരു ഐസർ പറഞ്ഞ എക്സാം ഉണ്ട്, ഡബിൾ ഐസർ. അപ്പൊ ഈ ഐസറിന്റെ ടോട്ടൽ ഇന്ത്യയിലെ 9 വേറെ വേറെ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്, ഗവൺമെന്റിന്റെ ആണ്. In this exam, if you give the exam, for especially for girls, government gives you stipend to study, but you have to clear the entrance exam for ICER. डबल आईसीआर का स्लाइड है क्या आपके पास? डबल आईसीआर का स्लाइड है क्या? नहीं। हाँ छोड़ो, कोई बात नहीं, लगाना है आप लिख के ले लो बाद में। हाँ सर। सर आगे 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 जाओ, 3 बजे मीटिंग एंड कर रहे हैं। अच्छा, ये श्रेयस गायकवाड स्क्रीन, वेरी गुड, देखते हैं। कंटिन्यू मैम फर्दर। आइसर बेस्ट आइसर इज इन कोलकाता, सेकंड नंबर इज इन पुणे. There are Kerala Malayali girls. This is Pune, our student Rohit Pardeshi. He cleared his FCAT examination 3 times, that is after graduation. So FCAT is basically examination for joining Indian Air Force. So he cleared his FCAT examination 3 times. Then he cleared his CDS examination twice. CDS is Combined Defense Services. He cleared that twice. But the portion for CDS and FCAT is a little similar like CET examination. CET examination is basically for management, getting admission for MBA, management after your graduation. So he cleared his, because he was preparing for CDS, he cleared his MBA entrance exam, that is CET, by 92%, which is very good percentage all over India. So सर आवाज नहीं आ रही आपकी? नहीं, जो MBA, the MBA that you give all over India, the name of the exam is called CAT, CAT. For that also you have to study properly. Now why consistently everything under one roof? इसके बारे में बताओ, सम्यक के बारे में बताओ ना. ADCI में you can study everything under one roof. You don't have to go anywhere else. Next slide. Yes, ma'am. Yes. So like this is a student. He was with Anis Academy last year. That is 2022. He has he had his board exam. He cleared his NDA written exam. He cleared his technical Army SSB. He was qualified for technical entry Army. He qualified for JEE advanced examination also. Like he cleared his JEE main exam and then he cleared his JEE advanced exam also. And he got selected in COEP for mechanical engineering specialization through CET. So important is all this examination have same subject, that is CM, physics, chemistry, maths. JEE is about physics, chemistry, maths. Entrance exams, MHT CET, which is the Maharashtra engineering exam, is physics, chemistry, maths. Technical entry. For technical entry also 12th board, you need your physics, chemistry, maths exam marks. With that JEE examination appearing also. So that is also physics, chemistry, maths. And in ND also you see, if you see, maths has the most important weightage for your marks calculation, and then physics, chemistry. So physics, chemistry was strong, so he could clear all the examination he appeared for. Under one roof, you can study for
Kerala entrance, you can also study for JEE, you can also study for NIT and REC, another entrance exam. The study is the same. There is one more exam which ma'am has forgotten. PITS पिलानी का भी नहीं मिला मैम, pamphlet है? सर है जो फॉर्म ओपन है उसमें लिखा है. हाँ तो नहीं आपको 5th March के लिए PITS पिलानी भी चाहिए. Yes sir. Now here Kerala crowd now most of them are OBC Mapla. So you have to here in Piyush More case you have to explain why JEE is good for people with reserved category. Hello. 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 हाँ sir. हाँ. Yes. So, in JEE there is reservation for like SC ST caste and even EWS, that is economically weaker section. So there is reservation for SC ST caste with EWS. So even if you score less, like out of 100, if open category student is scoring 90, but if reservation category student is scoring only 30 or 40 marks, still he can get selected because of reservation. So like you need to keep your documents ready, you need to keep your documents in place so that when you apply for these examinations, and if you are in reservation category, if you score less, still you can get Best Institute of India, that is IIT and all. So this is a student who is Piyush More. He was in reservation category, but he got selected in IIT through JEE examination. JEE examination has reservation. So these are our students who like played sports at district level and state level. So through sports also you can go in defense. There is different sports quota in defense. So through sports also you can go directly for interview SSB in defense. So that is the reason we at ADCI, Anis Defense Career Institute, we motivate sports. मैम मैंने वो सैयद मिसबाउद्दीन का भेजा था ना आपको, सैयद मिसबाउद्दीन का प्रोफाइल भेजा था ना, उसमें स्पोर्ट्स के बारे में फरहाना मैम को बोला 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो भी आपको पीपीटी में ऐड करना है. हेलो, क्या ऐड करना है? वो सैयद मिसबाउद्दीन का आपको उसका प्रोफाइल भेजा था ना. हाँ हाँ हाँ. तो उसके 4 चीजें स्पोर्ट्स के बारे में. अच्छा. 4 चीजें ऐड कर. हाँ सर. तो स्पोर्ट्स से भी हम आगे बढ़ सकते हैं, ये लोगों को पता होना चाहिए. यस सर. नेक्स्ट. टीचर्स, व्हाई टीचर्स आर इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट स्लाइड. यस मैम. See, like upgrading and upskilling is important in students. Like they have to learn new things every time. Similarly, teachers also have to get updated and upskilled. Without teachers getting updated and upskilled, nothing can work like what is planned. So all our teachers are Google certified. Sir, इसके पहले वाला slide. So if you can see that, like here, all our teachers are Google certified. There are many international teachers Olympiad also, that is international teacher Olympiad, which our teachers have cracked. Even there is one examination named CENTA. CENTA is basically Olympiad examination for teachers. So even that many of our teachers have cracked. Sir was listed 15th number all over India in maths through CENTA examination. So all our teachers are qualified, and we motivate them to appear for various examination from time to time so that they can get additional certification. Like Gulam sir is International Teachers Olympiad. He was qualified for International Teachers Olympiad. This is a success story of JEE and Sainik School.
all these teachers, we assure that all teachers are trained, and no matter what they are qualified, they have to be trained. Without training, it will not work. हम लोग एक पत्थर फोड़ते हैं ना तो बहुत बार फोड़ना पड़ता है. पहला पत्थर मारने से पत्थर नहीं टूटता. तो पत्थर टूटने के लिए बहुत बार हथौड़ा मारा तो टूटता है. सर्किट को म्यूट करो. Continue. Next slide. Yes, sir. This is our success story of JEE and Sainik School. Sainik School last year 3 students got selected. That is in Sainik School. अभी इस साल का भी बताओ ना. हाँ सर. अभी का रिजल्ट बताओ ना. इस साल का today only results are out for Sainik School written examination. First step is written examination, then merit, then medicals, and then merit list. So today results are out for Sainik School written examination. For standard 6, that is 5th standard students appeared for 6th standard examination. Our 22 students got qualified, and 12 students got qualified for standard 9th written examination. Just to mention here, 12 students getting qualified for 9th standard Sainik School written examination is great achievement, because 9th standard has very limited seats. 9th standard, only students who left school from 6th to 8th standard, only those seats get occupied. So every Sainik school have 1 or 2 or 3 seats available. So our 12 students got qualified. So this is big achievement for ADCI. So next slide. Yeah. The next slide. Every state has got a Sainik school. Now this is a success story for NDA and technical entry. In NDA, even now they are allowing girls to go to NDA. 8 lakh children sit for the exam, and out of that only 8,000 are selected. And from that 8,000, only 400 are selected of the final round. And in that 400, 7 to 8 children are from Anis classes. This year, 19 girls got selected. So it is important for girls also to write NDA exams. Next slide. Yes, ma'am, you should speak on this. We are hiring. We are hiring पे बात करो ना. लोग चाहिए हमको. Yes, sir. We are hiring people. Oh, hiring वाला pamphlet. We are hiring people. Yes. Business development executive. We are digital hiring marketing. people. Yes, ma'am. Hello. बोलिए सर. हाँ सर बोलिए. We need. नहीं आप ही बोलो ना मैम. We are hiring people, basically business development managers, digital marketing executive. We need graphic designers and digital marketers, web designers who can design websites and web designing. Video editing also is very important. So like, we are looking for these people, professionals who can work with us and grow with us. So we are looking for this also with this. We have to highlight that those children who are not good at studies, or they don't want to become doctors or engineers, tell them that if you are a web designer or if you are a digital marketing executive, you can earn crores of rupees by doing that business. So education का एक नया रूप है जो आपको बोलना है, पैम्पलेट बनाना है. असद सर वो जो डायलॉग है ना वो लिखना चाहिए. Education for everyone, education for employment, education for entrepreneurship. So entrepreneurship is very important. And education with ethics. So all these are also important. What do you do? Next one. Next slide. Next slide, please. We are also looking for skilled teachers. Like if anyone wants to become teacher, but they don't know how and where to start, we do free teachers training. So do connect us to people who are looking for their career in teachers profile. This is our sister concern company, that is ADCI Juniors. So we have preschool daycare tuitions from 1st to 5th grade here.
Sorry. It's okay. So junior ADCI is very important because our concept is nursery to Naukri. So it is very important to see that the children, they develop very well right from the beginning. 0 to 2, the new education policy talks about 0 to 2 age group, and then 3, 4, 5, 3rd, 4th, 5th standard, and then 6, 7, 8, and they have club 9, 10, 11, 12. A boy or a girl in 9th standard is getting 42 options according to the new education policy. Next slide. Thank you. So, thank you, children, for attending this program. So, we will be developing this kind of career guidance workshop all the time. 5th of March also we will be conducting a program. So, please join us. You want to know more about us, you can connect us on our, you can subscribe to our YouTube channel. Like, share or subscribe. It is live on YouTube. Or you can connect through website, you can connect through social media, through LinkedIn, through Facebook, through Instagram. Thank you all. End karo, Asad sir. Thank you. End करेगा ना वहां से? हाँ सर करता हूँ. जज़ाकल्लाह.